when we say, जब हम ये कहते हैं कि ऑन साइट इंस्पेक्शन के लिए टीम आएगी, वो क्या देखने आएंगे? क्या जेलों में बंद लोगों को देखने आएंगे कि वाकई वो बंद हैं, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा है जिसको आपकी हुकूमत ने पेपर्स में या पाकिस्तान की रियासत ने पेपर्स में डिसमेंटल किया है, क्या वो देखने आएंगे? सेकेंडली, since it's a matter of counter-terrorism, whether there was any concern about ongoing talks in Kabul or Peshawar with the TTP person, because the ultimate goal is to fight out terrorist entities, not to negotiate with them. Thank you. Sure. Interesting questions. On the second question, I will just say before, as you know, FATF is supposed to be a completely technical body, right? Once you go into through a process, once you're nominated to be grey-listed, there is a process that you follow and there's an action plan given. And that action plan is quite specific to what needs to be done. So the second question, yours, does not arise because this is obviously not part of any of the action plan items at all. This is an internal matter for Pakistan, I think, and this is obviously has no bearing on the work that we did with FATF. और ये आपने जो पूछा क्या देखने आएंगे, आई थिंक देखिए मैंने पहले बहुत वजाहत में कहा और मैं ये वजाहत भी कर रही हूँ और सच्चाई भी कह रही हूँ कि वो ये देखने आएंगी कि जो जो चीज़ें हमने रिपोर्ट की हैं कि ये हम लेजिस्लेशन कर चुके हैं, ये हम बॉडी बना चुके हैं, फैटिफ सेक्रेटेरिएट है, ऑपरेट करता है, उसके नीचे और लोग ऑपरेट करते हैं, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, नेशनल एंड प्रोविंसेस की कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सी बॉडी है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का क्या काम है, वर्किंग ग्रुप का क्या काम है, कौन सी एजेंसी क्या क्या करी है, ये सब कुछ एक टेक्निकल इवैल्यूएशन, ऑन साइट इवैल्यूएशन में देखी जाएगी. सो इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, उभाम भी नहीं है, ढकी छुपी बात भी नहीं है. लेकिन अगर हम बहुत डिटेल में ये सब कुछ नहीं जाना चाहेंगे, वो इसलिए नहीं जाना चाहेंगे बिकॉज उनका एक टेक्निकल काम है. अगर उसके आगे पीछे बहुत क्यास राई हो जाए, मैं ये बार बार दो टोक अल्फाज में कह रही हूँ, उसने पाकिस्तान को हार्म किया है. आर अर्ज टू क्विकली share the news or to be the winner in giving you the news has always harmed us. Okay, so इनके काम को हमने उनको स्पेस देनी है और उनको ये कंफर्ट प्रोवाइड करना है कि आप अपना काम आराम से कर सकेंगे यहाँ पे. सो हमारी बहुत कोशिश होगी कि हम उनका काम आराम से, सुकून से, उनको एक टेक्निकल तरीके से हैंडल होता जाए और उसको किसी तरीके से पोलिटिसाइज ना किया जाए. और आप लोग ये सारे प्लीज़ समझें कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ये टाइम पे हो जाए. इस वक्त अगर हमारे सामने कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है जिसके ऊपर टाइमलाइन है, वो ये है कि हम अक्टूबर 2022 की प्लेनरी से पहले ये तमाम प्रोसेस ख़त्म कर लें. दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इम्पॉसिबल टास्क ऑल्सो, बट इट विल रिक्वायर सम हार्ड वर्क एंड सम क्वाइट, sometimes diplomacy, sometimes quiet hard work at the technical level. So we are very keen to see this process through quietly. I am emphasizing that word, quietly. Mr. Naveed Siddiqui and the gentleman on your right, both of you, one after the other. Thank you. This is Naveed Siddiqui from Dawn News. Ma'am, there are reports that some friendly countries of Pakistan have helped to get Pakistan out of grey list. Your comments, please. Okay, I will say this with a lot of confidence that friendly countries, I mentioned to you diplomatic outreach, that's always there. Diplomatic outreach to say, but diplomatic outreach, please pay attention, I want to emphasize this. Diplomatic outreach for one possibility could be, oh, Pakistan is not able to do its work, Pakistan has not done anything on its action plan, but please help us. Versus diplomatic outreach, we have not only honored all of our commitments, we have overperformed, we have not only met the timelines, we have outperformed the timelines, we have done it ahead of time. So now that friendly countries' assistance, in some ways, is an assistance that we deserve. This is Zargun Shah from here, on this side. Yeah. Zargun Shah from Geo Television. मैम, एक तो हमारे जो जनरल पाकिस्तानी पब्लिक है, जो व्यूअर्स हैं, आपको सुन रहे हैं, उनके लिए ये बता दीजिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद फौरी पाकिस्तान को फ़वाइद क्या होंगे, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे. और दूसरा, इफ़ यू लाइक टू स्पीक, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू FATF, it is a different question, but if you like to speak, what is the update with you vis-a-vis the return of General Pervez Musharraf? Thank you. Unfortunately, I don't have any update on the last question. As you know, I was away, so
दूसरा आपने पूछा फ़वाइद क्या होंगे. मैं दो चीज़ें, आपने मौका दिया, मैं दो चीज़ें एम्फसाइज़ करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ों से हमें गुरेज करना है. ये कहना कि जी बहुत कुछ हो गया, लेट्स सेलिब्रेट, उससे भी गुरेज करना है बिकॉज अभी हम प्रोसेस में हैं. और ये कहना कि जी हमने तो कहा था ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे, ग्रे लिस्ट से तो निकले नहीं, ये भी गलत है, राइट? क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है. ग्रे लिस्ट में डलने का भी एक प्रोसीजर होता है, ग्रे लिस्ट से निकलने का भी प्रोसीजर होता है. इस वक्त हमने ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसीजर का पहला और इंशाल्लाह आखिरी मरहला शुरू कर लिया, ठीक है? बट आप ग्रे लिस्ट से इस मरहले के बगैर नहीं निकल सकते. कोई मुल्क कभी भी नहीं निकला, ये एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है. और यू नो डलने की भी बहुत सारी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं, निकलने की भी हैं. उससे फ़वाइद क्या होंगे? देखें, जब एक मुल्क ग्रे लिस्ट में होता है तो वो हर चीज़ को, आप चाहते हैं कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, आप चाहते हैं आप ट्रेड को अट्रैक्ट करें, आप चाहते हैं आप इस मुल्क में की रेपुटेशन बनाएं कि इसके फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हैं, इसमें लॉ सही तरह चलती है. ग्रे लिस्ट में होना उस सब का ऑपोजिट मैसेज देता है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, जो लोग इस मुल्क में आना चाहते हैं, जो लोग इस मुल्क में फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद एकदम आपके दरवाजे समझे खुल जाते हैं. ओके, सो आप एक रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का जो अभी भी हम हिस्सा हैं, लेकिन इसमें निकलने के बाद एकदम एक पॉजिटिव न्यूज़ जाती है, एक पॉजिटिव लोग यू नो जो कल को FDI लेके आना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ इंगेज करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई MOU साइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा होगा. पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर अगर एक मुल्क ग्रे लिस्ट में हो तो लोग झिझकते हैं और सोचते हैं करने से पहले. वंस वी गेट आउट ऑफ इट, एंड क्योंकि पाकिस्तान के प्रोसेस इतना प्रोट्रैक्टेड, इतना लंबा रहा है, इतना लोगों को पॉलिटिकली भी हो गया, तो लोगों को इतनी अवेयरनेस थी इसके बारे में, आई थिंक इट विल हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट इंशाल्लाह. एंड उस वक्त Followed by madam at the back. थैंक यू साद उमर शमसी. माय क्वेश्चन, ये मेरा सवाल है कि फैटअप का जो ये पूरा प्रोसीजर था काफ़ी अच्छे चल रहा है, तो क्या जो आप पिछली गवर्नमेंट को भी इसका कुछ क्रेडिट देंगी जो 3 साल 4 साल से जिस पर एफर्ट हो रही थी? और दूसरा मेरा को सवाल ये है कि कब तक जो है फैटअप की टीम पाकिस्तान का जो है दौरा वो कब तक मुतवक्किल है? अच्छा, जब ये हो रहा था ना आखिरी दिन, मुझे लग रहा था कि हमारा कंसर्न फैटअप से कम है और क्रेडिट बांटने में ज़्यादा है. एकदम बहुत ज़्यादा क्रेडिट के लिए यू नो डिमांड हो गई थी. सो वी आर गिविंग क्रेडिट एज आई सेड टू एनीवन हु सीक्स इट एंड टू एवरीवन, एंड डिजर्vedly so, okay, because as I said, this is not a certain political party's agenda, this is Pakistan's agenda, and for us we have to remain mature about it. We don't react to immaturity with immaturity, we have to remain mature about it. For us, it will be a win-win if everybody considers they have stakes in this. So indeed the previous government has stakes in this. We hope that every political party will continue to have stakes in enabling this to be a seamless process and one that doesn't end with the whitelisting of Pakistan. I think it's also important to emphasize that, because the whitelisting will take us out of the requirements of FATF. But our own requirements must still be there. And the momentum that we've gained, it's exceptionally. Again, what happens? A country gets an opportunity. You can either grab that opportunity and run with it and become a runner, meaning become a leader within that, or you can put all of that hard work to waste. Now, I would hope that Pakistan chooses to run with that momentum, to continue to harness that and to continue to build on it. For instance, I look at it like this. This has given us a very good foundation. Just blocks, Lego blocks, it's given us a very, very good foundation. Now, inshallah, as we move out of the grey list into the white list, we must keep on building on the blocks vertically, horizontally, to strengthen it. Foundation is great, but it's called strengthen bhi karenge, inshallah. बहुत अच्छी, ले लें आप जी ना बोल से अनवर अब्बास. मुझे ये जानना है कि पाकिस्तान पहले भी FATF में रहा, बाहर आया, इसी तरह बड़े बड़े दावे किए कि दोबारा अंदर चला गया. अब मुझे ये जानना है कि एक तरफ हम TTA के साथ उनको असिस्टेंस फार्म करने की कोशिश कर रहे हैं इंसानी अलमियत से बचने के लिए अफगानिस्तान में, तरीके तालिबान अफगानिस्तान, जिसका कि बैंड आउटफिट हक्कानी नेटवर्क पार्ट है, ऑफिशियल पोजीशन भी रखते हैं हक्कानी साहब. तो क्या हमारे इस तरह के एक्शंस हमारे आइंदा हमारे लिए मसाइल पैदा नहीं करेंगे? शुक्रिया. Let me try and understand this better. Are you saying that because the state of Pakistan continues to have ties with the state of Afghanistan, no matter who is in government over there, that will go against us? Yes. Every state is continuing to have ties at one level or the other. Many European countries will start
already have embassies there, and state-to-state ties are state-to-state ties. You cannot choose. You can choose who to elect, who to have as government within your own territorial boundaries. Outside of your own territorial boundaries, you have to have state-to-state relations. So I don't think that is by any ways impinging upon our future course of action with FATF in any way possible. So let me just, categorically let you know that. On the issue, देखें जो आपने current government के बारे में कहा ना, अगर आप ये कह रहे हैं हर किसी ने credit ले लिया, current government ने ले लिया, ये मेरे लिए इससे बड़ी बेहतर खबर कोई नहीं है. Because what that shows is कि हमारा काम credit लेना नहीं है, हमारा काम मुल्क को जो भी मुश्किलें पेश आएँ या मुल्क के लिए opportunities create करना है. हम government हैं, हमें आदत पड़ गई है कि government भी काफ़ी responsibly act करते रहें. हम इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को क्रेडिट अपने लिए काम करने के लिए कभी नहीं चाहिए होता. सो आई वांट टू से दिस वेरी कैटेगोरिकली एंड टू से कि हम बल्कि वी आर वेरी कीन दैट पीपल शुड शेयर द क्रेडिट बिकॉज देन दे हैव स्टेक होल्डर्स इन इट एंड देन एज वी गो इन ऑन द प्रोसेस वी वुड होप कि अगर और कोई अभी तो हमें और कोई इसके ऊपर नहीं, लेकिन अपनी लेजिस्लेशन तो बाद में करनी पड़ेगी और आप देखेंगे कि इस पे जो भी काम होगा इंशाल्लाह कंसेंसस से होगा. और मैं इस चीज़ को वी आर एंडिंग दिस, सो आई वुड लाइक टू जस्ट एम्फसाइज दैट नथिंग works better. जो आप कह रहे थे ना politicization होती है पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान के खिलाफ etc. When I appeared, we can't. So nothing works better in engaging with the world than at the platform of national consensus. Nothing gives more confidence to the international community on the direction of Pakistan than areas, decisions, steps that are taken with national consensus. We underestimate the importance of that. तो बिल्कुल हम पाकिस्तान का वो इमेज नहीं देना चाह रहे दुनिया को और इसमें आई थिंक हमने कोशिश की है कि हम अपने एक्शन से ये प्रूव करें कि मैच्योर हैंडलिंग किस तरह होती है. We are absolutely very keen of everyone has been a stakeholder in this process and let's just say that this is really a